Hmm. 12th Maths 1, chapter number 5, exercise 5.1, page number 151. Question number 5. Check whether the vectors 2i plus 2j plus 3k. Can you just tell me the vectors, please? Can you just dictate? Minus 3i, 3j, 2k. And 3i plus 4k. Check करो सही लिखा है. I'll call these three vectors as a bar, b bar, c bar. Check whether these three vectors a bar, b bar, and c bar, they form a triangle or not. Form a triangle or not. कैसे चेक करेंगे? अगर वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो समझो कि सपोज ये है ए बार, ये है बी बार, तो दो वेक्टर्स को ऐड करके हमको तीसरा वेक्टर शायद मिल सकता है, तो वो एक ट्रायंगल बन सकता है. यस और नो? ऐसे यस और नो? सो आई विल चेक ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा? ए बार प्लस बी बार, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो. ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू दिस इज माइनस आई प्लस 5j प्लस 5k एंड दिस इज नॉट इक्वल टू सी बार. चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं. बी बार प्लस सी बार चेक करते हैं. Isn't it? I'll check it for b bar plus c bar. b bar plus c bar is equal to, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा. So this will become 0i plus 3j plus 6k. But this is also not equal to a bar. चलिए और एक तरीके से देखते हैं. c bar plus a bar. c bar plus a bar. c bar plus a bar is equal to, वैसे भी वो नहीं फॉर्म करने वाला. 3 plus 2 5i plus 2j plus 7k, and that is not equal to b bar. Therefore the vectors do not form a triangle. What we say here? Therefore the given vectors do not form a triangle. Therefore the given vectors do not form a triangle. Any doubts about this? Hello? Please take the screenshot and check whether this is clear to you. Question number 6. In the given diagram, triangle PQR is given. This is A bar, B bar, C bar, D bar and minus D bar. You have to express C bar and D bar in terms of A bar and D bar. Now I would ask you to refer a triangle here. Refer a triangle. Say for example, if I am asking you to refer this triangle. What do you see? C bar plus D bar is equal to B bar. Can I say so? By triangle law. By triangle law, C bar plus D bar is equal to B bar. Can I say so? Can I say so? Hello? Yeah. In the same way. Let's say this is A bar. ये भी देखना है सही. This is minus D bar. So C bar minus D bar is A bar. Can I say so? C bar minus D bar is equal to A bar. Can I say so? Hello? Just add them now. Adding. Upon this is equation 1, equation 2. Add them. So 2C bar is equal to A bar plus B bar. Or C bar is equal to A bar plus B bar upon 2. Right? So C bar is expressed in terms of A bar, B bar. अब इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो. C bar plus D bar is equal to B bar. C bar is A bar plus B bar upon 2 plus D bar is equal to B bar. Multiply throughout by 2. तो क्या मिलेगा? A bar plus B bar plus 2D bar is 2D bar. So what is 2D bar is equal to
2b bar minus b bar is b bar minus a bar, बराबर है क्या? Therefore what is b bar is equal to b bar minus a bar upon 2. So these are the answers. Any doubts about this? Is the first answer, c bar in terms of a bar b bar, d bar in terms of a bar b bar. Is this okay? Any doubts about that? Great. Okay, उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए, find a vector in the direction of a bar that has magnitude 7 units. Now this is a bar. A bar is equal to I minus 2j. और इस डायरेक्शन में मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए कि जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स हो. Can I find out first of all the unit vector in that direction which is given by a cap? Unit vector a cap. Now what is the relation between a bar and a? We know that a cap is equal to a bar upon a. Yes or no? Is this okay? Vector divided by its magnitude is the unit vector. ये एक फॉर्मूले के तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा. Unit vector is equal to a bar upon a. Now what is a? अगर ये a bar है तो what is a? A is equal to modulus of a bar. That is equal to modulus of a is equal to square root of ax square plus ay square plus az square. I hope you know this. That is equal to square root of I का square, I का coefficient is 1 का square plus minus 2 का square plus 0 square. That is equal to square root of 1 plus 4. That is equal to root 5. And therefore what is a cap is equal to a bar upon a. I minus 2j upon root 5. This is the unit vector. अब इसी डायरेक्शन में मुझे 7 यूनिट्स वाला वेक्टर चाहिए, तो कोई नहीं, 7 यूनिट्स वाला वेक्टर ये हो गया 7a cap. बराबर है क्या? Therefore the required vector is equal to 7a cap, मतलब 7 times I minus 2j upon root 5. So that is 7 upon root 5 times I minus 2j, and that's the answer. Is this clear to you all? Please check whether this is clear to you and take the screenshot please. Question number 7. Find the distance from point is 4 minus 2 6, okay, to the following, to each of the following. Now let us say this is point P having coordinates x, y, z, x, y and z. So हमने उस दिन देखा था, एक एक करके लिखते हैं इसमें. Distance from xy plane. Distance from xy plane. क्या होता है distance from xy plane? It is modulus of z. Modulus of z. बराबर है क्या? So that is equal to 6. दूसरा, distance from yz plane वो distance from xz plane वो आप लोग कर लीजिएगा. होमवर्क या डायरेक्ट लिख दूँ? चलो लिख देता हूँ. Distance from yz plane is modulus of x, that is 4, and distance from zx plane that is equal to modulus of y, that is equal to 2. अगला d क्या दिया है? Is the x axis, distance from x axis. x axis से distance होता है इसका square root of y square plus z square. उस दिन हमने देखा था ये फॉर्मूले, अगर आपको याद होगा. ये सुनो, हेलो, ये सुनो. That is equal to square root of y square 4 plus 36. That is equal to root 40. That is equal to 2 root 10. Next, e, distance from y axis क्या होगा? And distance from z axis. Y axis का distance होगा square root of x square plus z square. That is equal to square root of x square 16 36. कितना आएगा? Square root of 52. That is 2 root 13. 2 root 13 units. F, distance from z axis, that is equal to square root of x square plus y square. That is equal to square root of x square plus y square मतलब 16 plus 4 root 20
2√5. That's the answer. Any doubts about that? Is that okay? Please take the screenshot. Question number 8. Find the coordinates of the point which is located A. 3 units behind YZ plane. 3 units behind YZ plane. Next, 4 units to the right of XZ plane. 4 units to the right of ZX plane. And 5 units above XY plane. 5 units above XY plane. Okay? Now let's see. So we consider this XYZ plane. X axis, Y axis, Z axis. X to Y. Curl the fingers of your right hand from X to Y, it will give you Z. Y to Z, it will give you X. And Z to X, it will give you Y. Now 3 units behind YZ plane. YZ plane के पीछे 3 units. देखो ये positive X axis है. This is the positive X axis. This is positive Y axis and this is positive Z axis. इस डायरेक्शन. समझे क्या? अब 3 units behind YZ plane. ये YZ plane है. उसके 3 यूनिट पीछे. 3 यूनिट इसके पीछे मतलब उसका x कोऑर्डिनेट होगा. इसका मतलब है उसका x कोऑर्डिनेट होगा -3. Did you understand this? क्या ये समझ में आ गया? क्योंकि +x इधर होगा, इसके पीछे जाएंगे आप तो -3 होगा. 4 यूनिट्स राइट ऑफ ZX प्लेन. ये ZX प्लेन है, ये ZX प्लेन है. तो इसके राइट साइड मतलब उस तरफ. राइट साइड मतलब उस तरफ ZX प्लेन. ऐसा मुझे करना पड़ेगा. X axis, Y axis, and Z axis. If I take it like this, ये भी सही रहेगा. ये मेरे ख्याल से आसानी से एक्सप्लेन करेगा. X मैं इधर X लेता हूँ. This is X axis. This is Y plus Y and plus Z. ऐसे लिखते हैं. ठीक है? This is X. दोबारा देखते हैं. 3 यूनिट्स बिहाइंड YZ प्लेन. ये YZ प्लेन है, उसके उस तरफ. अगर ये +x है उसके उस तरफ -x. करेक्ट. 4 यूनिट्स राइट ऑफ ZX प्लेन. ये ZX प्लेन है. इस ZX प्लेन के राइट साइड में. ZX प्लेन के राइट साइड में. आई रिपीट, ZX प्लेन के राइट साइड में. मतलब राइट साइड में इस तरफ अगर आप जाते हो तो मुझे y कोऑर्डिनेट प्लस मिलेगा. तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स अबो XY प्लेन. XY प्लेन के अबो 5 units. मतलब Z coordinate is +4. So what are the coordinates of this point? This point will have coordinates -3, 4, 5. Is this clear to you all? Hello. Is this clear to you all? Hello. Same type of question. Question number 8B. In YZ plane, 1 unit to the right of XZ plane and 6 units above XY plane. ऑन YZ प्लेन. अगर वो पॉइंट ऑन YZ प्लेन होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है कि उसका x कोऑर्डिनेट इज 0. 1 यूनिट टू द राइट ऑफ XZ प्लेन. XZ प्लेन का राइट 1 यूनिट टू द राइट मतलब उसका y कोऑर्डिनेट होगा +1. y इज इक्वल टू 6 यूनिट अबव XY प्लेन. 6 units above XY plane. That means Z is equal to 6. So what are the coordinates of this point? B is equal to 0, 1, 6. That's the answer. Please check whether this is clear to you. Okay? And take the screenshot please. Question number 9. Find the area of triangle with vertices this, this and this. You have to find out the area of triangle with these vertices. तो मैं बोलता हूं कि भाई ये है तुम्हारा ट्रायंगल. ठीक है? सो दिस इज व्हाटएवर. ये है ट्रायंगल.
position vector A bar, A, B, C. So I'll say let A bar is equal to position vector of point A. So what is it given by A bar? I plus j plus 0k. B bar is equal to position vector of point B, that is equal to I plus 0j plus k, and C bar is equal to position vector of point C, that is equal to 0I plus j plus k. You see? अब अगर मुझे साइड चाहिए ए बी बार, सो व्हाट इज ए बी बार इज इक्वल टू, ए बी बार इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पॉइंट माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बी बार माइनस ए बार. तो बी बार माइनस ए बार क्या बनेगा? दिस इज आई प्लस के माइनस आई प्लस जी. तो आई गेट्स कैंसल, माइनस जे 0i माइनस जे प्लस के, ऐसा बनेगा ए बी बार. समझे क्या? एनी डाउट सो फार? सिमिलरली आई विल फाइंड आउट व्हाट इज बी सी बार. बी सी बार इज सी बार माइनस बी बार, सी बार माइनस बी बार. दिस इज सी बार एंड दिस इज बी बार. सो दिस इज जे प्लस के माइनस बी बार, आई प्लस के. Open the brackets. J bar, K bar and minus K bar gets cancelled. So minus I. This is BC bar. And what is AC bar? या CA bar हम देखेंगे अभी. AC bar is equal to C bar minus A bar. C bar minus A bar. J plus K minus A bar. I plus J. तो इसमें J gets cancelled. So this is K minus I, that is AC bar. Now if I'll find out, if I want to find out magnitude of AB bar, what is magnitude of AB bar? Modulus of AB bar or modulus of AB or simply AB is equal to square root of x square plus y square plus z square, मतलब 0 square plus minus 1 का square plus 1 square, that is root 2. सही है? This is okay. Similarly I'll find out modulus of BC bar or modulus of BC or simply BC, which is equal to square root of ये है BC bar. So this is minus 1 का square plus 1 square and that is also root 2. AC bar का modulus of AC or simply AC is equal to square root of 1 square plus minus 1 का square, that is also root 2. Now all the three sides are equal, therefore triangle ABC is an equilateral triangle. So what is the area of equilateral triangle? There is a formula in terms of side. बोलिए. नहीं, root 3/4 into side square. This is the formula for area of equilateral triangle, जो आपको शायद 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में होगा रहा होगा कभी. You should know this formula. So this is root 3/4 into side square, root 2 का square 2 and 2 2s are 4. So the answer is root 3/2 square units is the area of this triangle. Is this clear to you all? Please check whether this is clear to you. I'll take the screenshot please.